Good evening, guys. Is it audible and visible to you? Guys, though it's online, but I'll require your responses. Yes, sir, you're audible. Okay, great, beta. Okay, so I'll start with type 3 sums. Okay, we completed type 1 and type 2 in my previous lectures. So we'll start with type 3. Okay, so let's just get started. But those who don't have notes right now, I send the soft copy also to you all. So you can refer to the soft copy. We are doing type 3 based on हाफ ईयरली. ठीक है बेटा, टाइप 3 वाले सम्स जो भी है वो हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सो व्हाट इज द फार्मूला? a equals to p 1 plus r upon 200 raised to 2n. a equals to p 1 plus r upon 200 raised to 2n. I'll be utilizing formula only. I don't believe in solving sums without using formula. ठीक है बेटा. Then also अगर किसी को हाफ ईयरली ओके विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करना है, सो यू कैन ब्रेक डाउन इनटू 6 months. मतलब 1.5 year को आप फर्स्ट 6 months, सेकेंड 6 months एंड थर्ड 6 months में आप डिवाइड कर सकते हो. आई ऑलवेज प्रिफर यूजिंग द फॉर्मूले a equals to p 1 plus r upon 200 raised to 2n. Let's get started with the first sum, beta. Find the CI on rupees 64,000 for 1.5 year. बेटा प्रिंसिपल कितना है बेटा? 64,000 है for 1.5 year. मतलब कितना? 3/2. At a rate of 5% per annum. Interest being compounded half yearly. So a equals to p 1 plus r upon 200 raised to 2n. Guys, any doubt, any concern, just be free to ask. So a equals to p कितना है? 64,000. 1 plus r upon 200 raised to n. मैंने एलसीएम लिया बेटा, 41/40 क्यूब है, तो 41/40 राइट इट डाउन 3 टाइम्स. 40 40 40 कैंसिल. 4 4 4 64. 4 4s are 16. 16 4s are 64 and 3 zeros get cancelled. So a is 1681 into 41. So a is rupees 68921. कितना बेटा? 68921. ये अमाउंट हुआ बेटा. So what is CI? A minus P. 68921 minus 64,000. CI is 4921. Guys, होप सो आपको समझ में आ रहा हो बेटा. गाइस, फर्स्ट सम में कोई डाउट? प्लीज गो थ्रू द एंटायर सम द वे आई डिड द कैलकुलेशंस. बच्चा, एनी डाउट इन द फर्स्ट सम? प्लीज लेट मी नो. आर यू ऑल कंफर्टेबल? इफ यू आर कंफर्टेबल बेटा, प्लीज ट्राई नेक्स्ट सम ऑन योर ओन. प्लीज ट्राई सम नंबर सेकंड ऑन योर ओन. Guys, I'm waiting. Hope so you are understanding better. Please try second sum on your own. I'll write down the data point. Please try to solve next sum on your own.
Question number 2. Calculate the amount and CR rupees 27,000 for 3/2 years at a rate of 6.2/3% per annum. So rate is 20/3% per annum. Okay, guys? Chalo. We all know A equals to P 1 plus R upon 200 raised to 2n. So A equals to P 1 plus R 20 upon 3 raised to 2n. N is 3/2. So A is 27,000. ये 10 हो गया बेटा. So A is 27,000. 30 plus 1 is 31/30 cube. So A is 27,000, my child, into 31/30, into 31/30, into 31/30. 0, 0, 0 cut, and 3 cube is also 27. So A is 31 into 31 into 31. A is equal to 29791 rupees. 29791. 31 into 31 into 31 is 29791. तो CI क्या होगा बेटा? A minus P, which is 29791 minus 27,000. Guys, please go through sum number 1 and 2 very, very, very sincerely, very thoroughly, beta. Anyone is facing issue, just let me know right away. Beta, Sir? please, online session, and that doesn't mean you cannot ask question. So, Yes, beta, I'm listening. why is it upon 200? Because हम लोग क्या हो जाता है, ये रेट जो है वो 5% पर एनम है, इसीलिए वो भी आधा हो जाता है ना रेट भी. That's why divide by 2 हो जाता है, इससे आपका 200 हो जाता है. So formula take care of that part. Okay, sir. Guys, is it really audible and visible to you clearly? No Yeah, disturbances? Sir, I have a question. Sorry, come again, beta. So, are you taking offline class tomorrow? No, beta. For this, but that's why I'm taking 2 sessions. Tomorrow also I'm taking 1 more session with you all. Okay? How to join that also? Either one. Both online. No, do I need to come tomorrow? Join tomorrow? No. Okay. And sir, Tomorrow why did only. Let us move to the third sum, guys. ओके बेटा, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है ₹340 फॉर 2 years. कितना बेटा? 2 साल के लिए है, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम. ठीक है, पहले सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल ढूंढते हैं. वी ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट इज बेटा PRT upon 100. So 340 is equals to P into R4 into T2 upon 100. So P is 340 into 50 upon 4. 170 into 25. P is equals to 4250 beta. Now please read the question very carefully. Second part of the question. Calculate the compound interest on this sum. On this sum matlab principal is same. On this sum 4250. For 1 year, 1 साल के लिए.
पेएबल हाफ ईयरली, ओके, मतलब हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज करेंगे। एट द सेम रेट, मतलब रेट जो था पहले वही सेम रहा। सो पेएबल हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज करो। So amount कितना है बेटा? 4421.70। They asked to calculate compound interest, तो compound interest भी calculate कर लेते हैं। A minus P, so 4421.70 minus 4250.00, rupees 171.70. Please go through the sum number 3. I'm giving you 2 minutes to go through the entire time. Sum number 1, sum number 2 and sum number 3. Again I'm repeating sum number 3 बेटा। sum number 3 में क्या हुआ? पहले आपको simple interest दिया गया था। From simple interest I calculated the principal and using that principal for 1 year payable half yearly at the same rate मैंने compound interest ढूंढा। You have to read each and every word very sincerely, very sincerely. Principal 4250 same sum बोला था, same rate बोला था, for 1 year बोला था। Don't, many students I have seen making mistake taking 2 years, but clearly it is mentioned for 1 year, underline करके रखो and payable half yearly. Please go through sum number 3 and then I'll move to next type, repayment type. Next type, which is repayment types. So, Yes, बेटा listening बोल। so repayment cancel किया है। स्कूल ने कैंसिल कर दिया? हाँ। Wow, good luck. But then also I feel I should teach you one sum. At least one sum करते हैं, ठीक है बेटा? सर Let me टेस्ट do के लिए one sum बेटा। रिवीजन सर हाँ बेटा। तो टेस्ट के लिए रिवीजन वर्कशीट से लर्न करना है या जो आपने दिया है उससे क्या बोलते हैं क्वेश्चन चैप्टर कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी रिवीजन वर्कशीट से करवा रहा हूँ। हाँ ओके उसमें अच्छे कैटेगराइजेशन ऑफ सम्स है, इसलिए मैंने अच्छे से सम को डिवाइड किया है ये वाली बुक से, इसीलिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट नोट से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों Okay. अच्छी बुक है। चलो लेट मी स्टिल डू वन सम, ओनली वन सम। सेकेंड सम में करवाता हूँ फ्री पेमेंट। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, दैट्स व्हाई, और कोई रीजन नहीं है बेटा। अगर समझो मैंने दिया के पास से, दिया ने मुझे 1 लाख रुपीस का लोन दिया। लिसन केयरफुली एवरीवन, assuming दिया gave me 1 lakh rupees का लोन। She says, sir, I will give you 1 lakh rupees का लोन at the rate of 10%। मैं बोला ठीक है। सो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसने 1 साल के बाद मुझे उसको कितना पेमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज आएगा। 1 लाख के ऊपर 10% मतलब 10,000 रुपीज आएगा। एंड शी कम्स एंड आस्क मी फॉर रुपीज 1,10,000। वो बोलती है सर 1 लाख प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट ऑफ 10,000, so at the end of 1 year I need to pay दिया 1,10,000। but मेरे पास खाली तभी 40,000 रुपीज थे। I had only 40,000 rupees to repay her। तो she says, okay sir, you repay only 40,000 to me,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1,10,000 देना था, यू आर पेइंग मी 40,000, so what is the balance amount guys? What is the balance amount? 70,000. 70,000. Now you all think and tell me, for second year she should charge me interest on 70,000 or 1,10,000? 70,000. 70,000. जितना रीपेमेंट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बाकी है, रीपेमेंट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बाकी है, दैट इज नथिंग बट माय प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। बस यही सेम कॉन्सेप्ट रीपेमेंट का है। ओके, एट द एंड ऑफ 1 year आई रीपे सम अमाउंट ऑफ लोन, तो जो बैलेंस होता है दैट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, नथिंग एल्स। बाकी सब कुछ सेम। Okay, so let me do, though it might not be in syllabus, but let me do sum number 2 of type 4 based on repayment. Okay, let us do one sum at least of repayment, second sum. कुछ ज्यादा difficult concept नहीं है, so we can do it. Second sum of repayment. रणबीर वाला करते हैं, रणबीर वाला। I am doing second sum on Ranbir wala. हाँ बेटा, everyone stay with me. Type 4 repayment. Ranbir borrows rupees 20,000 at 12% per annum compound interest. First year में प्रिंसिपल कितना था? 20,000 था। रेट कितना था? 12% पर एनम था। एक साल कितना? 1 year। तो इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? PRT upon 100। So 20,000 into 12 into 1 upon 100। कितना इंटरेस्ट है? 2,400। So amount 1, एक साल के बाद मुझे उसको कितना पे करना है बेटा? 20,000 plus 2,400, 22,400 रुपीस। एक साल के बाद मुझे उसको कितना पे करना है? 22,400 रुपीस। रीपेमेंट कितना है? रणबीर रीपेस 8,400 at the end of first year। कितना रीपेमेंट कर रहा है? 8,400। So कितना बैलेंस है बेटा? 14,000 rupees balance है at the end of first year. Now this balance या amount outstanding become principal for the second year. Where did 8,400 come from? But it is mentioned in the question. Please read out. Type 4 second question we are doing. Ranbir wala sum. He repays 8,400 at the end of first year. समझा बेटा? ये स्टेटमेंट दिखाई दिया तेरे को? Can you read out the statement? He repays 8,400 at the end of first year. Got it, my child? Yes, sir. Now for second year, my principal is rupees 14,000. My rate is 12% per annum. T is 1 year. So interest कितना होगा बेटा? 14,000 into 12 into 1 upon 100. Amount क्या होगा? कितना रीपेमेंट कर रहा हूँ बेटा मैं? At the end of second year, how much I am repaying बेटा? 9,680 at the end of second year. Okay. 9,680 at the end of second year. So कितना बैलेंस बाकी है बेटा? 6,000 rupees. Therefore, loan outstanding at the beginning of third year. Third year चालू होने में कितना लोन बाकी है?
6,000 rupees. So loan outstanding at the beginning of third year. Beginning of third year बोलो या end of second year बोलो, same ही चीज हुआ. At the beginning of third year is rupees 6,000. Understood my child? पूरा sum को समझा आपको बेटा? सिलेबस में हो या ना हो, I guess this is such a kind of sum आपको याद रह गया होगा, and you can apply anytime even if it comes in exam. Are you all comfortable, my child, with this sum? Yes, sir. Okay. If you're comfortable, now let's move to type 5 then. Type 5, okay? It is based on simple application of formulae, okay? आपको principal amount, CI rate, number of years, ये सब data point में से एक या दो चीज missing होगी, okay? We have to use simple application of formula in type 5, my child. In type 5, we just have to apply the formula. Let's get started. बेटा मैं ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपके लिए, particularly this session I'm recording. आप लोग कभी भी refer कर सकते हो. Whenever you get time, I would advise you to go through this session one more time. Okay? It will be really helpful to you. CI is a very easy chapter. Understanding में अभी देखो कितना easy है. But it is very lengthy chapter. Yes, beta, tell me. So are you taking another online class tomorrow? No, beta, I'm not taking any morning class tomorrow. Okay. No offline lecture for tomorrow only. Okay? That's why I'm taking tonight and tomorrow evening also. I'm taking one more slot tomorrow evening for you all. Thank you, sir. Okay. Chalo, beta. Let's Type meet up 5. tomorrow and get the test. My classes will be open from morning 10 o'clock to 8 o'clock. तुम लोग कभी भी आ सकते हो. Okay, sir. Type 5 based on formulae. So A equals to P 1 plus R upon 100 raised to N. This is for compounded yearly. Compounded yearly, my child. And A equals to P 1 plus R upon 200 raised to 2N compounded half yearly. Okay, my child? Fine. ये दो फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो बेटा. Please note down these two formulae. Okay, my child. So let's start. Let's start with type 5. Let us begin our session with type 5. First sum. In what time will rupees 15,000 yield 4965 as compound interest? Compound interest कितना है बेटा? 4965 at a rate of 10% per annum. N पूछा है. Okay? First step beta. What is amount P plus CI? 15,000 plus 4965. 19965. Amount is equals to principal 1 plus R upon 100 raised to N. 19965. 15,000. 1 plus R upon 100 raised to N. 19965 upon 15,000
1 plus 1 upon 10 raised to n. 15 से divide करो बेटा, 15 से divide करो, you get 1331 and 1000, which is 10 plus 1, 11 upon 10 raised to n. This is nothing but 11 by 10 raised to 3. Comparing, equating power with the same base. Since bases are same, my n is 3 years. Are you comfortable with the first sum, beta? The way I did the calculation, beta? Star mark, important sum. Such type of Yes. sum you can expect in exams. Please. What sum of money will amount to? मतलब आपको amount दिया है. Sir, what is n? Number of years. Okay, thank सर आप कौन सा सम अच्छा ओके बेटा वो PDF में थोड़े sums नहीं है. I'll send the soft copy of the question on the group. ओके Check. What sum of money will amount to rupees 11025 in 2 years at a rate of 5% per annum compound interest? Okay. A equals to P 1 plus R upon 100 raised to N. 11025 equals to P 1 plus 5 upon 100 raised to 2. 11025 equals to P 1 plus 1 upon 20 raised to 2. 11025 equals to P 21 by 20 raised to 2. 11025 equals to P 441 upon 400. So P is 11025 into 400 upon 441. Twenty-five into 400 multiply करो, you get 10,000 rupees. Please go through the calculation. बेटा ये वाले सम सिंपल होते हैं, खाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा इश्यूज होता है बेटा. A sum of money, a sum of rupees 16,000 yield rupees 1640 as interest in 2 years. Find the rate. Almost same line पे है बेटा. जब भी प्रिंसिपल और CI दिया है ऐड कर लो to get amount 16,000 plus 1640. दोनों को ऐड करो you get amount. Now we all know amount equals to principal 1 plus R upon 100 raised to N. 17640 equals to 16,000. 1 plus R upon 100 raised to 2. Therefore, 17640 upon 16,000. 1 plus R upon 100 raised to 2. 4 से divide करो, 441 upon 400. 1 plus R upon 100 raised to 2. 21 by 20 raised to 2. Taking square root on both the sides, 21 by 20 is equals to 100 plus R upon 100. मैंने LCM लिया बेटा, और कुछ नहीं किया. 100 plus R upon 100. 5 से cancel हुआ. 21 5s are 105. Therefore, R is 5% per annum. Sir, till what time is the class? Sorry, come again. Till what time is the class? I am going to complete till type 9. So till whatever time it goes. Okay, sir. बेटा आपको प्रिंसिपल दिया गया था, CI दिया गया था.
नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स से बेटा मैंने अमाउंट ढूंढा पहले, प्रिंसिपल प्लस CI इज अमाउंट एंड देन फॉर्मूला यूज किया A equals to P 1 plus R upon 100 raised to N. A equals to P 1 plus R upon 100 raised to N. Are you comfortable with the calculations that has gone through it, beta? Please, my humble request, unless you solve, you will never gain that confidence in the chapter. Fourth sum. At what percent per annum will rupees 4,000 will yield rupees 5324 as amount in 3 years? Easy. A equals to P 1 plus R upon 100 raised to N. 5324 equals to 4,000. 1 plus R upon 100 raised to 3. 5324 upon 4,000. 1 plus R upon 100 raised to 3. 4,000s are 41331. So that makes 11 by 10, the whole cube is equals to 1 plus R upon 100 raised to 3. Taking cube root on both the sides, I took LCM. 1010 cut, cross multiply. My request to you all, go through sum number 1, 2, 3, 4, and then we can move to 5, 6, 7, 8. Please go through sum number 1, 2, 3, 4. I am waiting. Try to do calculation on your own, bye. So, Bacha, please try to do calculation on your own. Everyone, please try to do calculations on your own. Don't blindly copy from the board. No point. Sir, in the third question, are we supposed to write per annum there? Yes, beta. There was no space though, that's why I didn't wrote. But you have to write. Rate of interest is always per annum, na? Calculated, that's why. It's better to write. Okay, sir. Thank you. So, बोल बेटा. थर्ड सम में लास्ट स्टेप कैसे किया 105 से 100 प्लस R उसके बाद 5% कैसे मिला? बेटा देख, ये 20 और ये 5. हाँ बराबर. नीचे से भी आप कैंसिल कर सकते हो, हाँ तो 5 मल्टीप्लाई कर, 21 5 105. हाँ और फिर 105 माइनस 100. अच्छा ऐसा ठीक है थैंक यू इधर भी वही किया. 10 कट, हाँ 110 माइनस 100. ठीक है थैंक यू सर Shall we move? बेटा आपका ये AWS खत्म होने के बाद ये चैप्टर को प्रायोरिटी पे, मंडे को प्रायोरिटी पे ये चैप्टर लोगे. You are going to practice all the times. In the next lecture, Monday/Tuesday/Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday के लेक्चर में मैं कंप्लीट कर लूंगा ये चैप्टर. So you need to practice a lot for this chapter. Again I am repeating. मैं अभी कर रहा हूँ सब easy लगेगा. But when you practice, when you do these calculations, it becomes tricky. That's why my request to you all, please solve. You got plenty to solve. You can solve after solving this worksheet. Okay. One time you can go through and revise my notes also. So आपके पास बहुत कुछ है practice करने के लिए. You have to invest bit of time on this chapter. 2 sum minimum 2 sum, maximum 3 sum आ सकते हैं. So up to 7 to 10 marks का वेटेज है ये चैप्टर का. Don't take it lightly. बेटा 5th sum स्टार मार्क, 5 स्टार मार्क. और भूलना मत, मैंने 5 स्टार बोला था. I'll tell you also. Last year this chapter was a part of unit test.
same sum एग्जाम में आया था and many students got confused. They couldn't understand the data point what was asked. It is clearly mentioned. Let us read out. The CI earned by the sum of money in 2 years at a rate of 8% per annum is 832. So what does this 832 stands for? CI. CI दिया है आपको बेटा. बहुत सारे लोग ने इसको प्रिंसिपल या अमाउंट अज्यूम कर लिया and that's why their sum went wrong. Please read out the question carefully. It is clearly mentioned CI is rupees 832. Okay. So CI is rupees 832. दो साल दिया है बेटा. कितना रेट दिया है 8% per annum. Find the sum. मतलब प्रिंसिपल ढूंढना है. See how I am doing the calculation. My request to you, please pay attention. What is CI? What is CI? A minus B. A minus P. What is A का formula? P1 plus R upon 100 raised to n. Are you with me? फोर से डिवाइड करो. ट्वेंटी फाइव प्लस 2. सर आपने 4 से क्यों डिवाइड किया? 4 से डिवाइड होता है इसलिए. अच्छा ओवरऑल. हाँ सॉरी. बेटा 27 स्क्वायर 729. अच्छे से लिखता हूँ. 729 P upon 625 minus P. बेटा अभी क्या करना चाहिए मुझे? LCM. Very Cross good. multiplication. LCM बेटा. Many students forget to take LCM and सीधा 625 से multiply कर लेते हैं and then they go wrong. Understood my child? LCM लेना है 625 से multiply करना है. Understood? How I did the calculation? कितना systematically, कितना organized way में मैं गया हूँ बेटा. Please note down such small things matters a lot. सर एक step extra होता होने दो. Cancellation किया, एक step बनाया. LCM लिया, एक step लिया. Square किया, एक step किया. फिर से LCM लिया, let it go. Sir, But can you explain the first step again? बेटा CI आपको दिया है. Yeah. What is CI? A minus B. A minus P. So this P will remain as it is end तक. अभी ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर अमाउंट को. So A equals to P 1 plus R upon 100 raised to n. Yeah. 1 plus 8 upon 100 raised to 2. 4 2s are 4 25s are. Take LCM 25 plus 2 27 by 25 square. What is 27 square? 729. What is 25 square? 625. Take LCM. So 729 P minus 625 P upon 625. So, but how is A equal to P in the हैं? first step? Mein, how did you convert A to P? मतलब एक का फॉर्मूला है ना अमाउंट का फॉर्मूला ना P1 plus R upon 100 raised to n. Okay, so you just wrote that. Okay, fine. हाँ मैंने A के बदले P का अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर दिया P1 plus R upon 100 raised to n. Okay, thank you. Sum number 6. In what time will principal of rupees 48,000
amounts to rupees 55566 at the rate of 5% per annum. n पूछा ना अपने को, ठीक है. A equals to P 1 plus R upon 100 raised to n. So 55566 upon 48,000 is equals to P, sorry, 1 plus pi upon 100 raised to n. 5 1s are 5 20s are. बेटा 6 से डिवाइड करो. बेटा ये दिख रहा है 9261 किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है? Comparing, since bases are same, बेटा are you with me with the calculation? मैंने 6 से डिवाइड किया 55566 को. मैंने 6 से डिवाइड किया दोनों को ऊपर नीचे. I got 8000, I got 9261. Trust me, मैंने ये सब कैलकुलेशन अभी अपने आप किया विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ. मतलब मैंने क्या बता रहा हूँ चाहता हूँ, मैंने इधर देख लिया 21/20 आ रहा था, तो मैं सोचने लगा 20 का क्या अराउंड 20 का स्क्वायर 4000 होगा, 20 का क्यूब कितना होगा 8000 होगा. तो यार 8000 6 से डिवाइड करूंगा तभी आएगा. सो आई थॉट ऑफ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6. कभी कभी सामने वाला को चीज को भी देखा करो. ये 21/20 है तो मुझे ये साइड भी 21/20 ही चाहिए. ओके. और माय हम्बल रिक्वेस्ट टू रिमेंबर 11 का क्यूब एंड 21 का क्यूब बहुत हेल्पफुल रहता है. 21 क्यूब इज 9261. सर ये सब हमारे नोट्स में नहीं है ना? बेटा वो पीडीएफ जो दिया है उसमें नहीं होगा पर आपके नोट्स में है. हाँ बेटा. और वो वाला रिवीजन वर्कशीट भी है ना, वेस्ट सेंटर पे आ चुका है. सो वन कैन कलेक्ट टुमारो दोज हु डोंट हैव इट. तो कल मैं टेस्ट लेने आ रही हूँ तो मैं वहां कलेक्ट कर लूँ. यस बेटा आप कलेक्ट कर सकते हो. हाँ सर कितने मार्क्स की टेस्ट है? आई डोंट रिकॉल बेटा. वो ग्रुप देख लो बेटा प्लीज. ओके ओके. We can give it on Sunday too, right? यस बेटा यस. In what time will rupees 8000 yield CI as rupees 1261? So बेटा अमाउंट कितना होगा? नाइन टू सिक्स वन. दिमाग में सम चालू होने से पहले ही इफ यू आर माय स्टूडेंट और अभी तुमने बाय हार्ट करके रखा है 21 का. 21 क्यूब कुछ ना कुछ करने के लिए बस. बेटा कंपाउंडेड हाफ ईयरली. क्वेश्चन में चेंज कर लो. इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. So A equals to P 1 plus R upon 200 raised to 2n. 9261 is equals to 8000. 1 plus 10 upon 200 raised to 2n. 9261 upon 8000. 1 plus 1 upon 20 raised to 2n. 21/20 the whole cube. 21/20 raised to 2n. Comparing 2n equals to 3, n is 1.5 years. देखा बेटा, अगर आप लोग अच्छे से लेक्चर सुनते हो तो आपका लर्निंग इधर ही हो जाने वाला था. 9261 दिखा मतलब 21 क्यूब स्ट्राइक होना चाहिए. At what rate % per annum will sum of rupees 18750 amounts to rupees 21870 in 2 years? A equals to P 1 plus R upon
100 raised to n. So 21870, 18750, 1 plus r upon 100 raised to 2. 21870 upon 18750, 1 plus r upon 100 raised to 2. 3 से divide करो. 729 upon 625. 27 by 25 square. Taking square root on both the sides. LCM 100 plus r upon 100. 25 on the 25 fours are multiply. Okay, my child. Please make sure you understand these questions very, very, very thoroughly. Please make sure you solve this question very thoroughly. The calculation should be very, very fast, beta. We cannot afford to lose on this sum only because of calculations. घर पे practice करना पड़ेगा. So, They kept this chapter at the end of the semester, but this chapter is very lengthy, beta. बहुत सारे types है. Okay, let us just briefly revise all the types we have done till type 5. Anyone? Type 1 was based on simply without using formulae. First year, second year, third year किया था. I'm just briefly revising type 1 to type 5. So when we move ahead now, sums are very easy. Okay, so you can recall it, what all things we have done. So type 1 क्या था? It was based on without using formulae. Amount for first year become principal for the second year. Amount for second year become principal for the third year, and so on. Second type was based on successive rates. R1, R2. Can anyone think of which formula we had utilized for successive rates? A equals to P 1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100. ये second type था. Successive rate. A equals to P 1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100. Third type जो आज किया हम लोग ने. Half yearly. With it. Half yearly. A equals to P 1 plus R upon 200 raised to 2n. Fourth type, repayment. Okay. Balance जो repaid value था उसको subtract किया था हम लोग ने. वो ये एग्जांपल याद रखना. दिया वाला एग्जांपल. मैंने जब उसको 40,000 लोन रीपे किया, the balance was 70,000. फिर fifth type, based on formulae, जहां आपको कभी रेट मिसिंग था, कभी प्रिंसिपल मिसिंग था, कभी नंबर ऑफ इयर्स मिसिंग था. So this type of sums can be asked. Now let's move to type 6. Very interesting type. Very interesting type. Just listen to me carefully. I'll tell you one story. My sister and my wife, both are doctors. One is pediatrician, one is gynec. Both are very intelligent, very, very intelligent. But due to Indian education system, they lack completely financial literacy. Zero financial literacy. कुछ idea नहीं है. तो फिर I took advantage of it. I did MBA in finance. So I took advantage of them. See how? I asked 10,000 from my sister. I said to her, see, you are giving me 10,000. I will pay you interest. She became very happy. My brother is giving me interest. Okay. I said, I'll pay you simple interest. So I am borrowing money on simple interest from my sister. Okay. My wife asked for the money. I said, okay, fine, you are my wife, but money is money. I will
I'll give this money to you, but you have to pay me compound interest. You have to pay me compound interest. मैंने 10,000 मेरे सिस्टर के पास से लिए at the rate of 10% for 2 years, for example, and I'm giving same amount to my wife at compound interest for 2 years. मैंने borrow किए simple interest पे, मैंने दिया उनको compound interest पे. 10,000 आया और on the spot मैंने दे दिया. So in this transaction, what is my advantage? मेरा क्या benefit हुआ? मैंने ये सब क्यों किया? सब प्रॉफिट मिलेगा. क्या profit मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. Very nice, beta. So the difference between CI and SI is my benefit, is my gain. Compound interest always will have a higher value compared to simple interest, because in compound interest आपको amount for first year become principal for the second year. मतलब higher value पे interest मिलता है. Interest के ऊपर interest मिलता है. So in this transaction, my advantage, my gain was difference between CI and SI. So exam में ऐसे questions पूछते हैं. If you look at the first question, Arun borrows rupees 24,000 from Brian and immediately lends to Chand. Okay. So in this transaction, what was the gain? Difference between CI and SI. Sometimes they can ask you directly, find the difference between CI and SI. Or sometimes they can give you this example. You should be readily solve this kind of sum. Now, if we calculate CI separately, SI separately, it will be humongous task. कितना time लगेगा? इसीलिए मैं आपको एक formula देता हूँ. That's why I'm giving you one formula. Okay? To calculate difference between CI and SI. I'll give you one formula to calculate difference between CI and SI. Okay? See how this formula works. But this formula will only work for certain condition. I'll write down the condition also for you all. ठीक है बेटा? अच्छे से note down करके रखो बेटा. In exam, more or less, मैं जो sums करवा रहा हूँ वही condition पे ही पूछेंगे. D, which stands for difference between CI and SI. D stands for difference between CI and SI. D stands for difference between CI and SI. D stands for difference between CI and SI. It is formalized D equals to P R upon 100. Simple R upon 100, no 1 plus. This formula to be utilized only when compounded yearly and for 2 years. And for 2 years only. अगर 3 साल के लिए पूछा तो this formula will not work. Then in such cases you have to solve CI separately, SI separately, and then subtract it. Okay, that's why I told you in exam they won't ask. But if they ask you, then you have to do it separately. But this formula, if you remember, your calculation will be done in fraction of seconds. Very easily, very fast. So only if the time is 2 years. For 2 years. This formula will work. R upon 200 raised to 2 will work only for compounded. Guess karo, half yearly. For 1 year. अगर compounded half yearly तो 1 year. Compounded yearly है तो 2 years. खाली formula में फर्क R upon 100 है और इधर R upon 200 है. बस power में तो 2 ही आएगा दोनों केस में. Please note down this formula and start solving all the sums of type 6 beta. Please start solving all the sums of type 6 fast. Very, very, very important. Very important formula. We cannot
skip out this type of sum beta. Let's start, my child. First, Arun borrows rupees 24,000 from Brian at SI for 2 years and immediately lends out this money to Chan for 2 years, compounded annually. Compounded annually for 2 years. Principal कितना है? 24,000. Rate कितना है? 5% per annum. For 2 years, beta. So D equals to P R upon 100 raised to 2. Difference is P. P कितना है? 24,000. R कितना है? 5. So the gain in the transaction is rupees 60. 24,000 लिए और सामने को SI पे लिए और मैंने CI पे lend किए. In this transaction, Arun gets gain of rupees 60. Easy sum. Second sum. Find the difference between CI and SI for 2 years on same sum at 5% per annum is rupees 240. The difference is 240 rupees, my child. 2 years, great. Rate is 5% per annum. What is my principal? So in such type of sum, this formula helps like anything. Trust me, this formula is very, very useful to you. Are you with me, beta? Comfortable, Cho? Guys, are you all comfortable with this type of sum? Please read out the data very carefully, beta. With the help of formula, the sums become very, very easy. The difference on the, we have to find the difference is 20 rupees. Principal is also given. Chalo, great. Principal 8,000 दिया है. Difference rupees 20 दिया है. For 2 years. Great. मुझे rate ढूंढना है. So D equals to P R upon 100 raised to 2. 8,000 दिया ना. Four twos are 4 paisa. So R is 5% per annum. तो अगर टाइम खाली 1 साल दिया तो फिर नॉर्मल मेथड करना पड़ेगा CI/SI का. हाँ बेटा. बेटा फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI में डिफरेंस नहीं होता अगर कंपाउंडेड ईयरली रहा तो. समझा? यस. अगर कंपाउंडेड ईयरली है तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल भी सेम रहता है ना, तो डिफरेंस आएगा ही नहीं. अच्छा. हाँ 3 साल के लिए बोले तो डेफिनेटली अलग अलग. अभी नेक्स्ट सम में रीड कर बेटा. On certain sum of money, difference between CI for a year but payable half yearly है बेटा. हाफ ईयरली के लिए मेरे को 1 साल ही चाहिए. हाफ ईयरली के लिए मुझे 1 साल ही चाहिए. फॉर्मूला क्या होगा? प्लीज नोट डाउन. दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मूला. R upon 200 है. क्या है बेटा? R upon 200 है.
So principal is rupees 48,000. Principal is rupees 48,000. Principal is rupees 48,000. बेटा ये सम को स्टार मार्क करके रखो, अलग सम है, क्यों? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है फॉर 1 ईयर. कंपाउंडेड हाफ ईयरली है फॉर 1 ईयर. बेटा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है फॉर 1 ईयर. प्लीज डोंट फॉरगेट. ओके प्लीज. एंड लास्ट सम, फिफ्थ वन. तो ये टाइप खत्म. अभी बस छोटे छोटे टाइप्स है. Three sums from each type. We are going to do type 7, type 8 and type 9. One sum each. Okay? On what sum of money will difference between CI and SI is rupees 25? 2 years है. Rate कितना बेटा? 5% पर है. Principal motion. D equals to P R upon 100 raised to 2. 25 equals to P R कितना है? 5. Please go through this sum and then we'll move to type 7. Are you comfortable with the formula? Formula को स्टार मार्क करके रखो, हाईलाइट करके रखो बेटा प्लीज. सर नहीं समझ में आया. हाँ यस बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझा बेटा? फिफ्थ का पूरा. फिफ्थ 1/20, 5/100 क्या होता है? 1/20. 1/20 का स्क्वायर 400. 400 मल्टीप्लाई. ठीक है. इक्वल टू है ना, तो नीचे का ऊपर. जब भी इक्वल टू साइन होता है ना बेटा, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर. तो ₹25 कंपाउंड और सिंपल के लिए सेम है ना? मेरा बच्चा इधर देख, ये वाले केस में भी ये 400 ऊपर. नहीं, हाँ बेटा, ₹25 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेम है ना? डिफरेंस है. हाँ ओके. चलो टाइप 7 माय चाइल्ड, एवरीवन टाइप 7. बेटा अभी मैं जस्ट दिया को बोला, अगर पहला साल कहा for first year my child, everyone say complete a statement. For the first year, CI and SI is same. Okay, so in this type 7, अगर ध्यान से रीड करो, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिया है. क्या दिया बेटा? अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिया है. अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिया है. अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिया है. बेटा फॉर फर्स्ट ईयर मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलूं या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूं, दोनों सेम ही होता है. सो आई कैन यूज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. ध्यान से समझना. अभी है ना ये सम्स, नंबर ऑफ सम्स आर वेरी स्मॉल, 3 सम्स ही है और मैं कराऊंगा समझेगा भी. बट नाउ यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग कि कौन सा टाइप है. इसीलिए अभी याद रखना, हाउ वी कैटेगराइज दिस टाइप. इट इज टाइप वेयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज गिवन. अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज गिवन बेटा. चलो टाइप 7 फर्स्ट सम. आशा इन्वेस्ट ₹8,000. भले वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर. बट she finds that at the end of 1 year, it amounts to ₹9200.
At the end of 1 year, it amounts to 9200. So for first year, beta. For first year, let us calculate. What is my principal? 8,000. What is my amount at the end of first year? 9200. So what is my interest for first year? 1,200. मतलब कितना हुआ? 1200 रुपया हुआ. बेटा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT upon 100. मतलब 1200. Why I am using simple interest का formula? Is it correct to use simple interest का formula? So because CI and SI is same. For first year, it doesn't matter to me. For first year, it doesn't matter to me whether मैं CI use करूँ, SI use करूँ. Okay, one. Always remember, always note down, star mark, जो करना है करो. जब भी difference of year 1 होगा, compounded annually, we can go ahead with simple interest का formula. बराबर? Difference of year has to be 1, but only one. Only one. So simple interest equals to P R T 1 year upon 100. So R is 1200 upon 80. R is 50%. Now simple sums continue. For second year. For second year, tell me amount for first year is principal for the second year. Will you agree? Amount for first year is principal for the second year. Rate मेरे पास 15% per annum है. So I2 कितना होगा बोलो? अभी ये normal sum type 1 sum चालू हो गया. ये मैंने type 1 sum चालू कर दिया बेटा. What time is class? Beta, I said I'll complete till type 9. We are on type 7. Okay? Okay. Now amount for second year is principal for the third year. Rate तो 15% per annum मालूम है. T 1 year. $15 20 minutes more ना बेटा. So amount at the end of third year is 12167. Amount at the end of third year is 12167. Are you all comfortable? First year, second year, third year. ये फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट. जब तक रेट ना मिला तब तक बेटा भले मैं 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करूं, बट मुझे अमाउंट एट द एंड ऑफ 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 फर्स्ट ईयर गिवन है. आई कैन गो अहेड विद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. वन मोर सम, एक सम और एक सम करते हैं, देन विल मूव टू टाइप 8. ठीक है? एंड आई वांट यू ऑल टू ट्राई सेकंड सम ऑन योर ओन. एक ट्राई बनता है बेटा. Try to do second sum on your own. Give a try, beta. Calculation is also a little bit complicated, तो मजा आएगा. Try to do second sum on your own. Try to do second sum on your own, my child. Ranjan invest rupees 15360. At the end of 1 year, it amounts to rupees 16320.
Let's see how I'm doing the calculation to simplify our work. Huh, beta? Four 25 is 4. 4 is 12. 3. So 25 by 4%. So my rate is 6.1 by 4% per annum. ठीक है बेटा? Calculate the amount at the end of second year. Okay, very easy. Second year. What is my principal? Amount for first year is principal for the second year. Rate is 25 by 4%. One 7,340. Hope so you are comfortable with this particular type. Amount at the end of first year is given. हर एक में underline करके रखो. Amount at the end of first year is given. Amount at the end of first year is given. Amount at the end of first year is given. Amount at the end of first year is given. Amount at the end of first year is given. Are you all with me, beta? Beta, I know little bit of patience from your end will be very, very helpful. Okay. Type 8 now. Type 8. We shall begin solving type 8. Type 8 को underline करके रखो. Amount at for 2 consecutive year is given. Amount for 2 consecutive year is given. Beta, amount for 2 consecutive years is given. Beta, 2 consecutive years का मतलब क्या होता है? बेटा अमाउंट फॉर 2 consecutive years का मतलब क्या होता है? Next to next year. Like next मतलब year. बैक टू बैक 2 साल का दिया गया है. जैसे A2 A3 दिया गया होगा या A3 A4 दिया गया होगा. समझा? आपको मैं ये टाइप को कैटेगराइज करता हूँ. अमाउंट फॉर 2 consecutive years. अमाउंट फॉर 2 consecutive years. मैं कैटेगराइज करता हूँ अमाउंट फॉर 2 consecutive years. सर ये सेकंड टाइप जैसे हो गया. नहीं, पीछे वाला टाइप जैसे ही है. Amount for 2 successive years given. A certain sum amounts to rupees 17640 in 2 years. मतलब 2 साल में मेरा अमाउंट 17640 है और 3 साल में मेरा अमाउंट 18522 है. Find the rate and the sum. बेटा मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन मुंह पे क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग के. Amount for second year is equal to, complete the statement. Amount for second year is equal to Principal of the first year. principal for third year. So can I say indirectly they have given this as principal for third year? Okay, you got principal for third year कितना है? 17640. Amount for third year कितना है बेटा? 18522. डिफरेंस ऑफ ईयर क्या है ये दोनों डेटा पॉइंट में? 1 ईयर है. सो इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल में कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? एक साल में कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 882 रुपीस. बेटा यू टेल मी यस और नो. मैंने आपको बोला था हाईलाइट करके रखो. When the difference of year is 1 year, can I use simple interest का formula? Can I use simple interest का formula if difference of year is 1? Yes, sir. Yes, So sir. 882 is my interest on principal 17640. For rate I don't know. Time is 1 year upon 100. So rate is 5% per annum. Again I am saying
How to distinguish this sum? Amount for 2 consecutive years is given. Yeah, 2 successive years is given. In this case, it was given for A2, A3. It was given for A2, A3. Amount for 2 successive years was given A2 and A3. Amount for 2 successive years was given A2 and A3, my child. Amount for 2 successive years was given A2 and A3. But A2 we all know, amount for second year is nothing but indirectly principal for the third year. So मेरे पास principal था, amount था, दोनों को subtract किया, क्या मिलता है? Interest. So ये सब में क्या करने का? दो values को subtract करो. Subtract करने के बाद क्या मिलेगा? Interest for 1 year on principal of 17640. Rate मालूम नहीं, वही तो find करना है. So we got rate as 5%. Now how to find principal? Original principal. But amount का formula we all know. Amount का formula is 17640. R is 5. Take LCM. So we get original principal 16,000 rupees. Please star mark this type, beta. Very important type. क्या करने का बेटा? How to identify this type? This type can be identified by when 2 successive years का data point is given. 2 successive years का data point is given. Amount for 2 successive years is given. Amount for 2 successive years is given. So what we need to do is we need to subtract it. क्या करना चाहिए बेटा? Subtract करना चाहिए. क्या करना चाहिए बेटा? Subtract करना चाहिए. Subtract करने के बाद जो डेटा पॉइंट मिलता है वो इंटरेस्ट है. वो क्या है बेटा? इंटरेस्ट है on smaller value as principal. इंटरेस्ट है बेटा. Subtract करने के बाद जो मिलता है वो इंटरेस्ट है on smaller value as principal. On smaller value as principal. ये 882 मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला. Rate we don't know. Time 1 year upon 100. तो 1640A2 है ना, तो आपने P3 लिखा है. क्या लिखा बेटा? आपने हाँ A2 है ना वो. ये 18522 है. 18522 and 17640. 17640 क्या है? A2 ना. हाँ A2 है. हाँ. Amount for second year. Yes. That is equivalent to principal for the third year, na? Amount for second year is nothing but principal for the third year. So principal और amount मेरे पास था. अच्छा ऐसे ठीक. बेटा last sum for the day. Okay? नहीं तो उसके बाद तुम लोग tolerate नहीं कर पाओगे. हाँ? Last sum, एक sum but खुद करो. मजा आएगा बेटा. I would appreciate if you try second sum on your own. Last sum for the day. We'll do type 9 next lecture. No problem. Thank you, sir. Thank you, sir. सम सिखाने के टाइम कोई थैंक यू नहीं बोला. खत्म करो तभी थैंक यू. Never mind, बेटा. Just joking. बेटा last sum please complete करो and then leave. हाँ? We shall stop. 9th भी करवा दो, 10th भी करवा दो. बेटा say it little bit loudly. Sir, I'm saying make us do 9th, 10th and 11th also, sir. अरे shut up ना भाई. बेटा amount for second year is principal for the third year. Amount है मेरे पास. Subtract करेंगे हम लोग बेटा. Interest क्या होगा बेटा? 5324 minus 4840 कितना होता है बेटा? 484 rupees. So interest is PRT upon 100. Yes, sir. 484 equals to principal 4840.
Rate we don't know, time 1 year upon 100. So rate is 10% per annum. Okay. Now, to find principal, amount is equal to principal 1 plus r upon 100 raised to n. So we'll take this amount 4840. Principal 1 plus 10 upon 100 raised to 2. बेटा ये 2 था ना at the end of 2 years. बेटा तुम लोग में से किसी ने मेरे को पूछा नहीं, obviously you must be tired, that's why. But किसी ने मेरे को पूछा नहीं कि sir why we are not taking 5324? Any reason? Sir, What क्या? if I take 5324? What happens? What happens if I take 5324? Why 4840 only? तो फिर वो तो फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा ना? नहीं, Sir, अगर 5324 लिया तो बेटा नंबर ऑफ ईयर शुड बी 3 एंड विद पावर 3 कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा. क्यों करना है? ओके, यू कैन टेक 5324 आल्सो, बट फिर पावर में 3 कर दो. 3 साल का ना, इसीलिए. That's why we go with a smaller power, 4840. You got principal as 4,000 rupees, and that's it. Please, I'm sending the recording of this session. If you get time, go through it once. Okay, it will be very helpful to you all. We'll continue with type 9 on Monday, Tuesday, or Wednesday. Okay? Thank you, sir. hi, Welcome, sir. beta. Bye, Thank sir. you. Thank you, sir. Hi, And sir. enjoy your AWS. Bye, Yeah, beta. Take care. bye. Sir? Good night, sir. Thank you.